All right, we are live. Hello, good evening, and welcome back to the Law Entrance YouTube channel and to another session of the Hindu analysis. Today is 3rd of September, and we are ready to start. How many of you are online? Quickly give me some responses in the chat box, and then let's start very quickly. Good evening, everyone. Good evening, good evening, good evening. चलो ठीक है, जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज. We'll keep today's session a little quick. All right, let's look at the agenda for today's discussion. The first three topics which we're going to discuss in detail is, first of all, the headline news, which is Supreme Court judgment on governors. We'll talk about that in a little more detail. What is the exact judgment? Then there are a couple of editorial articles. One is on how we need more women judges, especially in the higher courts, High Court and Supreme Court. So this gives you an entire list of how many judges currently have been judges of Supreme Court since history, since like independence. Then there is another article which talks about sickle cell disease. Now this is a new article, a different article which we'll talk about. Then of course we'll be doing the 3 new vocabulary words of the day, and we'll be looking at a couple of other important articles as well which are on the newspaper. So I hope everyone is live and I'm audible and visible. Start karte hain. Without any further delay, let's begin our discussion for the day. Ciao. Let me just present the newspaper for you all. Just give me a moment. Okay, governors can't sit over bills endlessly. I hope the screen is visible. I hope the newspaper is visible to all of you. Governors can't sit over bills endlessly, says Supreme Court judges. 3 judges say that governors could neither delay indefinitely the legislature's wisdom nor impede constitution's functioning. Tamil Nadu says governors cannot assume to be royalty in a republic. So we'll talk about this in a little more detail when we come back to our PPT. On the left hand side, you see the impact of the earthquake, which we also saw yesterday. The death toll has crossed 1400. Another earthquake jolts Afghanistan. So this is sort of like a aftershock, another earthquake, which has hit the east of Afghanistan, 5.2 magnitude. The yesterday one was 6.0 magnitude. The epicenter of the tremor was close to where a magnitude 6 earthquake hit late on Sunday night, devastating remote areas in the mountainous provinces, the Hindu Kush Mountains. Okay, cool. आगे बढ़ते हैं. BRS, which is the Bharat Rashtra Samiti, which is a political party based out of Telangana, suspends KCR's daughter, Kavita, for anti-party activities. So इनकी जो है कविता जी की थोड़ी सी बहस हो गई है, पंगा हो गया है सीनियर पार्टी लीडर्स के साथ, हरीश राव एंड संतोष राव, तो इनको पार्टी से निकाल दिया गया है. ठीक है. India sets eyes on $1 trillion semiconductor market. PM promises faster approvals. Now this is interesting. यहाँ पे हो क्या रहा है? बेसिकली मोदी जी ने एक ये कॉन्फ्रेंस हुई थी सेमीकॉन इंडिया, यहाँ पे इन्होंने बोला है दैट वी वुड मूव टुवर्ड्स मैन्युफैक्चरिंग सेमीकंडक्टर्स इन इंडिया एंड वी वुड मूव टुवर्ड्स फास्टर अप्रूवल्स फॉर दिस मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स. एंड जो सेमीकंडक्टर मार्केट है ग्लोबली वो $1 trillion पहुंचने वाला है, एंड इंडिया wants to contribute a huge chunk to it. He's saying the work is underway. And speaking at this Semicon India conference, he noted that India has achieved a GDP growth of 7.8%, even as the rest of the world was mired in self-interest. So यही है कि सेमीकंडक्टर में हमें काफी ज्यादा इन्वेस्ट करने वाले हैं. ठीक है. City-based news is not important, so we'll skip right past it. State-based news, Punjab MLA booked, not important. This is also not important. Nothing important here. ठीक है, we can skip this. Jairanj calls off fast as Maharashtra government forms panel for OBC eligibility. तो जो जयराज पटेल हैं ये प्रोटेस्ट कर रहे थे for getting OBC reservation for these people. And अब जो है कमेटी फॉर्म करी जाएगी, पैनल फॉर्म किया जाएगा. So he has now called off his fast. West Bengal House debates harassment of Bengali migrants. ठीक है. Behind Maratha issue resolution on day 5 of stir, a climb down by both Mahayuti government and activists. ये वही issue है, protest against reservations. ठीक है. Nothing important as such here. It's all just state politics.
Okay, this is interesting. Kerala governor moves Supreme Court on CM's role in selecting VCs. ये वही वाइस चांसलर्स यूनिवर्सिटी की बात हो रही है कि क्या रोल रहना चाहिए एक चीफ मिनिस्टर का इन द अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर. सो यहाँ पे की कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो गवर्नर होते हैं वो ही स्टेट यूनिवर्सिटीज के बाय डिफॉल्ट चांसलर भी होते हैं. जो जैसे अगर केरला के गवर्नर हैं, ही वुड बी द चांसलर ऑफ ऑल द स्टेट यूनिवर्सिटीज, व्हिच गिव्स हिम अ लॉट ऑफ पावर्स इन अपॉइंटिंग द वाइस चांसलर्स एज वेल. अब कुछ एग्जांपल्स दिए यहाँ पे इन्होंने, जैसे अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के, डिजिटल यूनिवर्सिटी केरला के. एंड अब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल करी है जिसमें दे आर आस्किंग, द गवर्नर इज आस्किंग to exclude the chief minister from the VC selection process from these universities. अब क्यों the governor is opposing the involvement or role of the chief minister? He's saying that laws governing these universities do not mention any role for the chief minister in the appointment of the VCs. And उन्होंने UGC की guidelines को quote किया. UGC is Universities Grant Commission, which prohibit anyone associated with the university or its affiliated colleges from being part of the selection, obviously to keep away from bias and all, है ना. तो वही कह रहे हैं कि उनके inclusion से there is a sense of bias which is coming in the selection process and उससे conflict create हो रहा है. इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने काफी ऑर्डर्स किए हैं जहाँ पे उन्होंने बोला है कि स्टेट गवर्नमेंट एंड चांसलर जो है नेम सजेस्ट करेंगे सर्च कमेटी का. सर्च कमेटी वुड बी द बॉडी विच वुड फाइंड एंड रिकमेंड वीसी कैंडिडेट्स. एंड गवर्नर ने इस चीज को अपोज किया. उन्होंने कहा कि सिर्फ इंडिपेंडेंट और इमिनेंट एक्सपर्ट्स जो हैं पैनल पे होने चाहिए, ना कि पॉलिटिकल अपॉइंटीज. सो दैट इज व्हाट इज गोइंग ऑन. अब देखते हैं कोर्ट इसमें क्या डिसाइड करता है. लुक एट दैट. ओके, ठीक है, लेट्स मूव अहेड. Kerala opposition leader hints at non-cooperation with TDP, not important. UP government to set up sourcing corporation, not important. Editorial की बात करते हैं. India needs more women judges in Supreme Court. This we'll discuss on our PPT. So let's hold it for then. On the left-hand side, you see unmistakable shift. India signaled a change in foreign policy stance at the SCO, which is the Shanghai Cooperation Organization की summit जो Tianjin चाइना में हो रही है. तो सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट ये है कि दिस वाज मोदीज फर्स्ट विजिट टू चाइना सिंस 2018. 7 सालों के बाद ये पहली बायलैटरल मीटिंग है वन ऑन वन टर्म्स पे विद प्रेसिडेंट शी जिनपिंग सिंस द 2020 गलवान क्लैश हैपेंड. इंडिया चाइना बॉर्डर स्टैंड ऑफ जो हुआ था अक्रॉस द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल. एंड अब हमने री एंगेजमेंट स्टार्ट किया विद द SCO. एंड this comes after skipping the SCO summit for 3 consecutive times, which now shows a shift in our foreign policy. Ki now we are willing to engage with China on a bilateral level. SCO की बात करें तो SCO की बात हम कल भी कर चुके हैं. It's a Eurasian group which is sort of seen as a counter to the West, anti-West group है, led by China, led by Russia, Central Asian countries. And कैसे हमें दिख रहे हैं signs of India China getting closer? First of all, fast tracking of the border resolution issues, then easing of visas, then direct flights, that Kailash Mansarovar Yatra, economic ties, trade tariffs, वो सारी चीजें जो है, all of that is coming together where India and China are getting closer. And both the leaders recently talked about, building ties with mutual respect, mutual trust. And basically this is coming as a result of what Donald Trump has been doing for the past few weeks. The tariffs and sanctions on both the countries and the growing distrust of both the countries in US की foreign policy, especially under the Trump administration. So वही है कि इंडिया ने थोड़ा टाइम तो डाउनप्ले किया चाइना को because of its involvement in Operation Sindoor and blocking India's moves at the United Nations for designating terrorists. But now the foreign policy is changing a little bit. And we are using words like cross-border terrorism in the SCO summit, जिसको चाइना भी एग्री कर रहा है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं होना चाहिए. बट उसमें ये नहीं बोला कि पाकिस्तान जो है परपेट्रेट कर रहा है. उन्होंने एक न्यूट्रल सॉर्ट ऑफ पर्सपेक्टिव से बात करी उसकी. एंड दे अग्रीड ऑन रिड्यूसिंग टेररिज्म एंड कंडेमिंग US Israel स्ट्राइक्स ऑन ईरान एंड गाजा में जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा. चाइना का जो BRI है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसके कुछ पार्ट्स को इंडिया ने रिजेक्ट किया. ये जो समिट हुई थी उसमें
और कुछ नए इनिशिएटिव्स डिस्कस हुए, जैसे एससीओ डेवलपमेंट बैंक का इनिशिएटिव डिस्कस हुआ। देन एक सिविलाइजेशनल डायलॉग का इनिशिएटिव स्टार्ट करने की लोग सोच रहे हैं, वेयर दे वुड एंगेज विद ईच अदर ऑन अ कल्चरल लेवल। अब बस यही है इस आर्टिकल में कि क्या क्या हुआ एससीओ समिट में, उसके क्या क्या implications थे। द सुप्रीम कोर्ट टू द सोल्जर्स रेस्क्यू। नाउ व्हाट इज दिस आर्टिकल अबाउट? लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है? अर्थक्वेक्स नीड नॉट बी डेडली इफ बिल्डिंग कोड्स आर फॉलोड स्ट्रांगली। सो ये तो वही अफगानिस्तान अर्थक्वेक से रिलेटेड है। एंड राइट साइड पर हमारा जो आर्टिकल है उसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो हमारे इंजर्ड मिलिट्री कैडेट्स होते हैं, यानी कि जिनको लेट्स से इन द बैटल फील्ड या फिर ड्यूरिंग ऑपरेशंस उनको इंजरी हो जाती है, उनको काफी हद तक निग्लेक्ट कर दिया जाता है। यू नो, वंस दे सफर इंजरीज which sort of sometimes are even career ending injuries, they are sidelined by the system, they are neglected by the system, even though they vowed for serving the country. सो अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक सुओ मोटो एक्शन लिया है। इस पर सुओ मोटो मतलब अपने आप से, किसी ने कोई प्ली नहीं डाली, कोई कंप्लेंट नहीं डाली, सुओ मोटो एक्शन लिया है, टेकिंग नोटिस ऑफ दिस इनजस्टिस व्हिच इज हैपनिंग एंड दे हैव टेकन एक्शन ऑन द गवर्नमेंट रिगार्डिंग दिस। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है? सुप्रीम कोर्ट ने बोला है दैट you need to create a report around these particular cadets and the cadets who are boarded out. Boarded out is the technical term which is used for people who are removed from military academies after getting serious injuries during training. Usually they are not getting a lot of support for recovery and for their life afterwards. तो ये एक जो systematic neglect हो रहा है, जो bureaucratic apathy generate हो गई है towards them, वो एड्रेस करने की कोशिश की है सुप्रीम कोर्ट ने। दे आर सेइंग दैट द स्टेट इज नॉट एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ दीज कैडेट्स एंड शोइंग लैक ऑफ एम्पैथी, फ्लेक्सिबिलिटी इन हैंडलिंग सच केसेस। एंड सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि रूल्स आर रिजिड एंड ब्यूरोक्रेसी जो है फेल कर रही है इन अडेप्टिंग देम एंड लुकिंग एट ह्यूमन सफरिंग फ्रॉम अ human point of view rather than a very strict rule based point of view. तो उन्होंने multiple case scenarios, real life examples दिए हैं। एक पायलट का एग्जाम्पल दिया है उनकी विडो का, कि एक इंडियन एयरफोर्स के पायलट जिनकी डेथ हो गई क्रैश में, हिज वाइफ वाज प्रेग्नेंट एंड पेंशन रूल्स जो कहते हैं वो यही कहते हैं कि विडोज विद चिल्ड्रन वुड गेट एनहांस्ड कॉम्पेंसेशन, नॉट विडोज हु आर प्रेग्नेंट। सो वहां पे जो है लाइक देयर इज अ लूप होल इन द लॉ एंड ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उसमें एक्सेप्शन नहीं क्रिएट कर रहे कि जो लॉ में लिखा है हम वही फॉलो करेंगे। तो वही है कि रूल्स को फिर चेंज करना, कैसे उसमें डिले को आप डील करोगे जल्दी जल्दी, दैट इज व्हाट दे वांट टू इम्प्लीमेंट। Then another example is of an injured pilot in Siachen. वहाँ पे he suffered a crash and he was removed from service, and then फिर his pension was not being given, etc etc. तो वही है कि they are saying that we are depending too much on special cases rather than having a fair sort of mechanism, fair framework which helps everyone rather than just sticking strictly to the written rules, because that shows lack of empathy, that shows lack of trust, and really that's really messed up. Like, people who are serving for the country, you should definitely give them back. So वही बात है कि एक moral and ethical call है to take action and to change this cold attitude, to change this mindset. That is what it is in this article. Then आगे चलते हैं। सिकल सेल विल टॉक अबाउट इन द पीपीटी, द बैटल फॉर डिसेबिलिटी जस्टिस। लेट्स सी व्हाट एल्स डू वी हैव। डिकोडिंग सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ऑन रेगुलेटरी एसेट्स, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए, आप स्किप कर सकते हो। वाई इज इंडिगो डैम प्लीज्ड, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी स्किप कर सकते हो। गिग वर्कर्स पे बुक है, ये भी स्किप कर लो। डेली राइट्स कॉन्स्पिरेसी केस, हाई कोर्ट रिजेक्ट्स बेल प्ली ऑफ 10 accused। ठीक है, तो 2020 वाले डेली राइट्स की बात हो रही है, इन पे बेल रिजेक्ट हो गई है एक्यूज लोगों की। ऑलराइट, ठीक है। मोदी हिट्स आउट एट आरजेडी कांग्रेस ओवर अब्यूसिव रिमार्क्स अगेंस्ट हिज मदर। ओके, दिस इज ऑल जस्ट पॉलिटिक्स हियर। Singapore PM Wong begins India visit for partnership talks. Now, this would be interesting to see. This person, Lawrence Wong, would be meeting Modi, would be meeting Jaishankar, etc. And they would be sort of furthering India-Singapore relationships. So we'll see when we get inputs from this particular meeting. Right hand side वाला जो article है वो काफी important है। COP30 to focus on known solutions, says its president. What's COP30? COP is Conference of Parties. तो climate change के around ये एक sort of annual summit होती है, climate summit होती है, UN करवाता है।
एंड इस बार ये होने वाली है ब्राजील में इन नवंबर. And they are saying that now we are going to focus on action and practical solutions rather than big climate deals and announcements, etc., etc. And the major points are that this is the 30th sort of conference of parties to the UNFCCC. नहीं, 3 बार सी है, UNFCCC. Just give me one moment, guys. सॉरी, आई एम बैक. सो हाँ, मैं आप लोग को बता रहा था COP30 के बारे में कि COP30 के जो प्रेसिडेंट साहब हैं उन्होंने कहा कि अब हम प्रैक्टिकल जो है सॉल्यूशंस पर फोकस करेंगे. इनके प्रेसिडेंट का नाम है आंद्रे कोरिया दो लागो. सो या, दैट्स व्हाट इट इज. इसमें एक और बहुत लैंडमार्क कॉप समिट थी, COP21, जो पेरिस अग्रीमेंट के टाइम पे हुई थी 2015, which created a global agreement जिसमें सारी countries participate करेंगी to limit global warming below 1.5 degrees Celsius. So yeah, that is what it is. Let's see how it goes. आगे चलते हैं. आगे तो ये तो important नहीं है. PM Modi receives first made in India Vikram 32-bit chip. So again, this is somewhat related to the semiconductor wala thing. This is a chip which would be utilized for space flights. It's an advanced refurbished version of indigenously designed 16-bit Vikram 1601 microprocessor used in avionics system of ISRO's launch vehicles. So ये made in India इन्होंने chip बनाई है. सेमिकॉन इंडिया वाली जो वो कॉन्फ्रेंस है उसी में ये प्रेजेंट करी गई थी. सही है, बढ़िया है. ओके, आगे देखते हैं क्या है इंटरेस्टिंग. ठीक है, डेथ टोल इन अफगानिस्तान, सूडान में लैंडस्लाइड. ऑलराइट, नथिंग न्यू हियर. आर्मी चीफ मुनीर पार्ट ऑफ पाकिस्तान टीम दैट मेट चाइनीज प्रेसिडेंट टू डिस्कस टाइज. तो इनका भी डिस्कशन चल रहा है साथ साथ, आसिम मुनीर और शी जिनपिंग का. एशिया कप में इंडिया आगे बढ़ चुका है हॉकी में. क्रिकेट का एशिया कप अभी स्टार्ट होना है. दूसरी साइड यूएस ओपन चल रहा है. मिचेल स्टार्क हैज रिटायर्ड फ्रॉम T20 इंटरनेशनल्स. ओके, ठीक है. आई थिंक दैट्स ऑल वी हैव फॉर द न्यूज़पेपर टुडे. लेट्स कम बैक टू आवर PPT एंड discuss our articles. Okay, the first one is regarding Supreme Court judgment on governors. Let's see what this is. So 3 out of 5 judges on the presidential reference bench on Tuesday orally observed, along with the states of Tamil Nadu and West Bengal, that governors could not sit endlessly over bills placed before them for assent. Chief Justice B.R. Gavai and Vikram Nath and P.S. Narasimha separately remarked that governors could neither delay the wisdom of the legislature indefinitely nor impede the functioning of the Constitution. No organ can impair the functioning of the Constitution, Justice Narasimha said. When Constitution is clear that a governor should act with immediacy, why should he hold back bills? There is a sense of urgency associated with the governor's assent. अब स्टैटिक जीके की बात करें इसमें, तो आर्टिकल 200 टॉक्स अबाउट द कंसेंट ऑफ द गवर्नर, कि उसको या तो असेंट देना है या होल्ड करना है या रिजर्व करना है. दे कैन नॉट सिट ऑन द बिल. They can also return the bill with a message requesting reconsideration. But 201 कहता है when a bill is reserved for consideration of the president may assent to it or withhold assent from the bill. Constitution provides that governor can exercise his powers only on advice of Council of Ministers under 154. The next article talks about India needing more women judges in the Supreme Court. B.V. Nagratna, sole women judge out of full strength of 34, currently serves as a Supreme Court judge. And as a member of the collegium, she expressed her dissent over a recent appointment on the grounds that there were others more senior, and on the basis of regional representation, her dissent was not taken into consideration. Historically, only 11 women have been appointed to court till date, which is a mere 3.8% of 287 judges who have been appointed since inception in 1950. तो ये नाम मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं, आप लोग पढ़ सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो. The first one was Justice Fatima Bibi. Some recent one was Indira Banerjee, Hima Kohli, Justice Bela Trivedi, currently Justice B.V. Nagratna, who will retire in 2027. ठीक है जी.
Last appointment of women to the court was on 31st August 2021, and the collegium led by Chief Justice of India N.V. Raman appointed three women judges. This was seen as unprecedented because even appointment of three women at one go was a rarity. Justice Indira Banerjee was already on the bench, and Justice Bela Trivedi and B.V. Nagratna, I think, were appointed. So women in Supreme Court are also appointed much later in age, which severely limits their time on the bench and their opportunities to rise to positions of seniority. Out of 11 women judges, only 5 have been part of Supreme Court Collegium, with only 3 having been involved in appointments to the court. In 2017, Collegium headed by Justice Deepak Mishra made public some resolutions of the Collegium of Supreme Court website, which included reasons for appointments. Presence of women judges on the bench is vital to the court. Women judges bring unique perspectives based on personal and professional experiences with the law, which significantly impact judicial outcomes. And bringing different perspectives and diverse form of reasoning is important for public trust and confidence as it integrates social context and experiences. Presence of women judges of various backgrounds in Supreme Court will make it a truly representative court for all citizens, which it intended to serve. ठीक है जी. The last article, this one talks about sickle cell, the battle for disability justice. March 2024, Indian government issued revised guidelines under right of PWD Act 2016, which provide a framework for assessing the extent of disability of people with 2 copies of the sickle cell gene, or both sickle cell and beta thalassemia, or HBD. Sickle cell disease होता क्या है? This is a painful, progressive and disabling blood disorder disproportionately affecting marginalized communities. So आपके blood cells को affect करता है. Recognition under this act was expected to provide reservations in the allotment of agricultural land, housing, poverty alleviation, development schemes and education, work, healthcare for those with the disease. So basically इसको disability के under count किया जा रहा है. ये जो PWD Act है, this extends reservation in public sector employment under the 4% quota for persons with vision and hearing loss, locomotor disabilities, intellectual disabilities, और अब जो है इसमें sickle cell disease भी आ जाएगी. Individuals with SCD and other blood disorders are not included in the quota. This marked a step towards protecting the rights of persons with disabilities and promoting their full inclusion in society. The law aligns with UN Convention of Right of Persons with Disabilities, promising dignity, equality, and non-discrimination, expanded the legal definition of disability, introduced right-based protections with benchmark disabilities. इस एक्ट का सेक्शन 2R कहता है that the term benchmark is used to identify individuals with disabilities who meet a certain threshold of impairment, usually 40% or more. तो जिनके पास ये बेंचमार्क डिसेबिलिटीज होती हैं उनको मिलती है फ्री स्कूल एजुकेशन, रिजर्वेशन इन हायर एजुकेशन, डेवलपमेंटल असिस्टेंस एटसेट्रा एटसेट्रा, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट. एंड मेजर बैरियर्स जो है सर्टिफिकेट मिलने में, सर्टिफिकेशन प्रोसेस में, क्योंकि मेडिकल अथॉरिटी जो है CMO जो होता है वो वैल्यूएट करता है और सर्टिफाई करता है आपकी डिसेबिलिटी को. And they say that disability is a lived experience, not only shaped by physical health, but also social inclusion, structural barriers, policy gaps, and unless India's recognition of sickle cell disease brings real rights and protections, it risks becoming exclusion disguised as inclusion. Young person may miss school due to hospitalization or lose jobs due to debilitating pain, all without qualifying for a higher score. So that brings us to the end of our analysis part. सिकल सेल डिजीज के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है. दिस इज अ इनहेरिटेड हीमोग्लोबिन डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय जेनेटिक म्यूटेशन कॉज्ड बाय रेड ब्लड सेल्स टू अज्यूम अ सिकल और क्रिसेंट टाइप का शेप, ऐसा शेप बन जाता है. दिस एबनॉर्मलिटी इन आरबीसीज रिजल्ट्स इन इंक्रीज रिजिडिटी, impairing their ability to circulate effectively throughout the body, और इससे एनीमिया, ऑर्गन डैमेज, पेन एपिसोड्स एक्सेट्रा हो जाते हैं. ट्राइबल पॉपुलेशंस में ये ज्यादा होता है. सिम्टम्स मैंने आपको बता ही दिए. So yeah, that's about the SCD. The vocabulary for the day, let's look at that. The first word is tantalize, which means to cause someone to feel interest or excitement about something that is very attractive or appealing. Yani ki intrigue, excite, ya thrill. Antonyms are bore, weary, pal. She was tantalized by the possibility of earning a lot of money quickly. The next word is loggy, which means tired, thaka hua, weary, exhausted, depleted in strength. Next morning I was feeling loggy, having stayed up half the night. Antonyms are fresh, relaxed, and active. And the last word for the day is panacea or panacea, a solution or remedy for all difficulties or diseases. So Ramband iklauta ilaj, that is what panacea is. Technology is not a panacea for all our problems.
That brings us to the end of our discussion for the day. I'll meet you all in another Hindu analysis tomorrow on Thursday. Till then, take care. Tata. Bye bye. Signing off.